Hi guys. So today is day 5th of covering ethics, and today we are covering our unit 6, which is public civil service values and ethics in public administration. So let us start with the first topic, that is public values. So public values are the principles that guide government decision for the welfare of society, and they ensure that public institutions work in the interest of citizen rather than the individual. So public values जैसे कि पब्लिक वेलफेयर, इक्वालिटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड इंक्लूसिवनेस, ये सारी कुछ पब्लिक वैल्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव सिविल सर्विस वैल्यूज़. सो सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या होती है? दे आर द एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. जैसे कि इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब है कि सही चीज़ सही टाइम पे करना, जब कोई हमें ना देख रहा हो. इट्स नॉट दैट कि कोई हमें देख रहा है, कोई हम पे सर्विलियंस रख रहा है तभी हम सही काम करें. इट्स कि अगर कोई भी हमें नहीं देख रहा है, व्हेन नो वन इज वॉचिंग, स्टिल वी आर डूइंग द राइट थिंग. दैट इज इंटीग्रिटी. Honesty means, as you all know, that speaking truth and avoiding fraud. Objectivity is taking decisions based on facts rather than personal opinions. Impartiality means treating everyone equally without any discrimination based on any XYZ factor. Then we have political neutrality, that is civil servants serve whichever government is elected. It's not ki if some government they personally like, they'll support that. No. Whichever government is elected, civil servant have to serve them. Then accountability, that is being answerable for one's decision. Then transparency, it means making government action open to citizens. Then comparison means showing concerns. Sorry, I'm so sorry. It's not. It's compassion. Compassion means showing concern towards weaker section of the society. Then we have ethics in public administration. So ethics in public administration मतलब moral principles को apply करना while implementing government policies. So इसके क्या objective है, क्यों करते हैं हम? ताकि ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, फेयर गवर्नेंस हो, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो और करप्शन को हम प्रिवेंट कर सके. इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहला है रिड्यूस मिसयूज ऑफ पावर. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. इट इम्प्रूव्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. इट प्रमोट्स गुड गवर्नेंस. नाउ पब्लिक और सिविल सर्विस की क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस है, अब हम वो पढ़ते हैं. सबसे पहला है करप्शन. करप्शन एज यू ऑल नो कि जब हम इलीगल बेनिफिट लेते हैं फ्रॉम द पोस्ट और फ्रॉम द अथॉरिटी डेट वी हैव. दिस इज एग्जाम्पल द नीट UG 2024 पेपर लीक एंड एग्जामिनेशन irregularities illustrate corruption. So this is a example of corruption. Next, we have red tapeism. So, red tapeism is also a very big challenge in public service, which is excessive paperwork which cause delay. Right. Example, delays in obtaining land and environmental clearances for infrastructure projects have shown slowed project implementation despite digitization efforts. कि डिजिटाइजेशन होने के बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस प्रोजेक्ट है या फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो रहती है. नेक्स्ट वी हैव नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इज गिविंग प्रेफरेंस टू रिलेटिव्स. लाइक आदर्श कॉलोनी सोसाइटी स्कैम हुआ था मुंबई में, जिसमें कि जो फ्लैट्स थे वो सिर्फ उनको मिले जो उनके फेवरेट लोग थे या फिर जिन्होंने पैसे दिए थे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेपोटिज्म. नेक्स्ट भी है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि जब पॉलिटिशियंस प्रेशर डालते हैं किसी भी पब्लिक और सिविल सर्वेंट पे, जिससे कि उनका जो डिसीजन है वो फेयर नहीं रहता. जैसे कि एग्जाम्पल, एलीग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट इन वेस्ट बंगाल हाईलाइट पॉलिटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस. नेक्स्ट वी हैव इनएफिशिएंट सर्विस डिलीवरी. इट मीन्स लो ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर से रिड्रेस नहीं करना, उनकी बात ना सुनना. लाइक डिले इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस सच एज राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पेंशंस. एक काम को कराने के लिए लोगों के 100 चक्कर कटवाना ऑफिस के, दिस इज नोन एज इनएफिशिएंट सर्विस डिलीवरी. एंड डिस्पाइट बीइंग एवरीथिंग डिजिटलाइज्ड.
So the next challenge is lack of accountability and transparency. So officials escaping responsibility and secretive decision making. Example, allocation of housing under a state government scheme face criticism due to non-transparent and selection process. ये स्कीम निकाली जाती है ना जहाँ पे घर की अलॉटमेंट्स होती है टू डिफरेंट पीपल. सो उसका कुछ भी जो पूरा प्रोसेस है कुछ भी उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कि किस बेसिस पे उन्होंने अलॉटमेंट दी है, किसको अलॉट किया है. देर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी. सो दिस is a problem of lack of accountability and transparency. Next, we have conflict of interest. So, conflict of interest is a situation where an individual private interest conflict with their public or professional responsibilities. जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपना प्राइवेट इंटरेस्ट देखना चाहिए या फिर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जो उसे निभानी चाहिए, या फिर वो उसे देखे. ठीक है. सो इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. सबसे पहले है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम्पल, एन IAS ऑफिसर डिक्लेयर्स दैट अ रिलेटिव ओन्स अ कंपनी बिडिंग फॉर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी उसका इंटरेस्ट है पहले से उसे डिस्क्लोज कर दो. सेकेंड इज रेक्यूसल, मीन्स स्टेपिंग असाइड. For example, a judge refuses to hear a case involving a close friend. Third is transparency. Make decision open and transparent to reduce suspicion and build public trust. Like government department conduct all procurement through the government e-marketplace where details are publicly available. I hope you know what is e-marketplace, where government sell and buy their usable things like furniture or any gadget that they want in their office. सो उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म है विच इज़ जेम पोर्टल, वी ऑल्सो कॉल्ड है जेम. जेम इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. सो उस पर सारी जो डिटेल्स है वो अवेलेबल रहती है एंड कोई भी उसे देख सकता है. तो उसी के थ्रू ही प्रोक्योरमेंट हो. नेक्स्ट वी हैव कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट. एग्जाम्पल कि सिविल सर्वेंट ने एक कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने से मना कर दिया कोई कॉन्ट्रैक्टर से. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, एक सिविल सर्वेंट कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता while dealing officially. Next is accountability. Example, a district officer explains delays in implementing a welfare scheme during a legislative committee review. उसने प्रॉपर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि क्यों लेट हुआ, क्यों वो स्कीम अभी तक नहीं आई. सो दीज आर दी सॉल्यूशंस जिससे कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोक सकते हैं. So next we have ethical dilemmas in government institutions. Right, ethical dilemmas is कि जब हम confuse हो जाते हैं related to what to choose. First is law versus compassion. Example, a poor street vendor is violating municipal rules. Now the dilemma is strictly enforce the law or show humanitarian concern. Second is loyalty versus integrity. Example, a senior officer orders an illegal action. तो उसमें डायलेमा हो जाता है कि या सुपीरियर के ऑर्डर्स को ओबे करे या फिर लॉ से चले. सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, एन ऑफिसर नोज अबाउट अ मेजर स्कैम. सो उसका डायलेमा क्या है कि क्या वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे या फिर करप्शन को एक्सपोज कर दे, सबको बता दे. फोर्थ इज डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट. एक हाईवे प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो काफ़ी जॉब्स तो क्रिएट कर रहा है बट साइड बाय साइड वहीं पे एक पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है. सो इसमें डायलेमा क्या है, क्या डेवलपमेंट को प्रमोट करे या फिर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे. नेक्स्ट वी हैव नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी. सपोज अ गवर्नमेंट सर्विलियंस हेल्प्स प्रिवेंट टेररिज्म बट इट ऑल्सो अफेक्ट सिटीजन प्राइवेसी. So the dilemma is which value should take priority. Now these are the dilemmas in government institutions. Now we have dilemmas in private institution as well. So let us read about that. First is profit versus employee welfare. Suppose a company faces financial loss. So dilemma is whether to lay off employees or accept lower profits. Next dilemma is profit versus environmental protection. Example, installing pollution control equipment is expensive. So the dilemma is क्या profit को reduce करे या फिर environment को harm करे. Third is customer privacy versus business growth. For example, selling customer data increase revenue. So क्या हम privacy को protect करें या फिर अपने profit को maximize करें.
Next, we have shareholder interest versus social responsibility. For example, closing a factory improves profit, but it leaves many workers unemployed. So the dilemma is whether to maximize shareholder return or protect employees. Next is product safety versus cost. Suppose कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो और उसकी पूरी चेन को हमें वापस रिकॉल करना है. सो रिकॉलिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एक्सपेंसिव. Right now, the dilemma is recall the product to protect consumers or continue selling it. Guys, I'm so sorry for my voice. I have little cold from 2 days. That's why I can't able to upload the video on time. So just please adjust with my voice. Now, next topic is source of ethical guidance. Ethical guidance की क्या क्या source है? It's conscience, law, rules and regulations. So laws, rules, and regulation serves as vital source of ethical guidance, offering a structured framework for determining acceptable and unacceptable conduct in society. Conscience is internal source of ethical guidance. It is the inner voice that helps a person distinguish between right and wrong. It is based on personal values, beliefs, and ethics. Now, it encourages honesty and integrity. It develops through upbringing and experience, and it may differ from one person to another. कभी कभार हम कुछ अगर गलत करते हैं तो हमारी इंटरनल फीलिंग्स हमें वो चीज़ बताती है, हमें अंदर से ही अच्छा नहीं लगता. सो दैट इज कंसाइंस. तो ये भी हमें एथिकल गाइडेंस में हेल्प करती है. जैसे कि अशोक खेमका कैंसल्ड इलीगल लैंड डील्स डिस्पाइट रिपीटेड ट्रांसफर्स. So he doesn't care about his transfers. The only thing that he cares about is being ethical and being very transparent and follow the rules properly. Next example is a person returns a lost wallet even when no one is watching. So it is also an example of conscience. Like when our internal feeling guides us or when our internal feeling tells us to do the right thing. Next, laws. How laws guides us. So laws are legally binding rules made by the government to maintain justice, order and protect the rights of citizens. It is enforced by the government. It protects citizen rights and laws ensure equality and justice. Example, Right to Information Act promote transparency. Prevention of Corruption Act punishes bribery. Right. Now we have rules and regulations. So they are the detailed guidelines issued by the organization to implement laws and ensure discipline, consistency, and ethical conduct. It also helps to implement laws efficiently, maintain discipline and accountability, and ensure uniform standards of behavior. Example, civil service conduct rules prohibit accepting gift from people with official dealings. जैसा कि अभी हमने recent example देखा. And second example is RBI regulation ensure ethical functioning of banks. So conscience provides internal ethical guidance while laws, rules and regulation provide external guidelines. So together they ensure ethical behavior, accountability and good governance. Now the next topic we are going to cover is accountability. So as we all know the meaning of accountability, so let us read once. So accountability means being answerable for one's action, decision and their outcome. It ensures that public officials and institutions act responsibly, transparently and in the public interest. Now why do we need accountability? What is the significance? So first it strengthens democracy by making public official answerable to citizen. For example, Aruna Roy's RTI movement empowered citizens to question government decision. Second, it helps to build public trust through transparency and responsible governance. It also ensures clarity by clearly defining roles and responsibilities. It prevents corruption and misuse of power through audits and oversights. It promotes transparency in decision making and use of public resources. Now, how can we ensure accountability? What are the ways? First is clear ethical standard and guidelines. Proper ethical standards को set करना and proper guidelines mention करना that what is allowed and what are not allowed. Second is independent institutions like judiciary, CAG, Lokpal. They should all act independently. They are, no doubt, they are acting independently, but action of one should not
change the decision of another. Third is effective RTI implementation, citizen participation and social audits, मीडिया को फ्रीडम होनी चाहिए, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल मॉनिटरिंग. So by these ways we can ensure accountability. Next is ethical governance. So ethical governance is the practice of governing an organization or government according to ethical values such as integrity, honesty, fairness, transparency and accountability while complying with laws and regulations. Now what are the components of ethical governance? So ethical governance is a combination of ethical leadership, ethical decision making, accountability and transparency, compliance with laws and regulation, and ethical culture. So these all constitute ethical governance. Now, example E. Sridharan. He was known as Metro Man of India. He was known for integrity, transparency, and efficient project management. Second, we have T.N. Session. I hope that I am pronouncing it right. Session. He strengthened ethical governance by enforcing free and fair election. Third example is RTI Act. It promotes transparency and accountability in government. Fourth, we have Digital India and DBT. That DBT is direct benefit transfer. It reduces corruption by ensuring transparent delivery of benefits. Now, next topic is ethical issue in international relation. So these are the moral challenges that arise in the interaction between countries, international organizations, multinational companies, and non-state actors. They involve balancing national interest with global justice, human rights, peace, and sustainable development. Now, major ethical issues are: first, human right violation. Example, Myanmar's military's persecution of the Rohingya community. Second issue is war crimes and genocide. Example, use of chemical weapons during the Syrian civil war. Next, ethical concern is environmental degradation. Example, Amazon rainforest deforestation. Fourth, next ethical concern is nuclear weapon and non-proliferation. It means possession and possible use of nuclear weapons which threaten global peace. Next issue is cybersecurity and information warfare. Example, mass surveillance program and misuse of personal data. Now moving on to the next topic, we have ethical issues in international funding. So what is international funding? It refers to the financial assistance provided by developed countries, international organizations such as World Bank, UN agencies, IMF, etc. Now major ethical issues are: first, subverting sovereignty. It means donor countries often impose conditions on loans and aid. Example, IMF loan condition during India's 1991 economic crisis. जब इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था and we went to IMF for taking loans. So what condition they put? That we have to adopt LPG policy first, and it's mandatory. Without it, they're not going to give us any loan because our economic condition was very weak at that time. Second issue is exploiting compulsion, which means wealthy nations may exploit financially weak countries for economic gains. Example, China weak countries को या फिर अपने से कम जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसको लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कि तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाओ, वी आर गिविंग यू लोन्स एंड असिस्टेंस, बट समहाउ दे आर क्रिएटिंग अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कि वो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे एंड दे आर एबल टू ओवरकम दैट कंट्री. नेक्स्ट वी हैव अनएथिकल क्लिनिकल ट्रायल्स. It means pharmaceutical companies may conduct trials in poor countries due to weak regulation. Example, clinical trials in economically vulnerable African countries. जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनको अपनी कोई अगर दवाई टेस्ट करनी होती है तो व्हाट दे डू द ट्रायल्स इन अफ्रीकन कंट्रीज बिकॉज वहाँ पे देर इज़ नो डेवलपमेंट, देर इज़ नो अवेयरनेस अबाउट एनीथिंग. सो वो वहाँ पे अपने जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्राई करती है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एथिकल इशू. नेक्स्ट इज न्यू कॉलोनियलिज्म, which means financial aid may create long-term economic dependence. Example, multinational companies dominating local markets.
Last, we have terror financing. So foreign funds may be diverted for terrorism or money laundering. So this is also one of the major concern related to international issues. So this unit is a little big one. So I have not completed every topic in this single video. This is a, yeah. So we have covered yes, so this is one of the lengthiest unit of this ethics syllabus. So I have not covered each and every topic here. I'll try to cover the remaining in the next video because then काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी. So हमने क्या क्या कवर किया है, just have a look once. Yeah. So public service, values and ethics in public administration, status and problems we have covered, ethical concerns and dilemmas in government as well as private institution we have covered, laws, rules, regulations we have covered, and conscience. Then accountability we have covered, ethical governance we have covered, strengthening of ethical and moral values in governance, this is left. Ethical issue, international relation and funding we have covered, and corporate governance is left. So two topics are left. I'll try to cover it in next video because then काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी. So वो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है because it become boring. So I'll try to cover it in next video. एंड गाइज अगर तुम भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो तुम मेरे नोट्स के रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी रिसर्च करने के बाद 2-3 सोर्सेज को कंबाइन करने के बाद ही अपने नोट्स बनाए हैं. सो यू कैन ट्रस्ट ऑन माई नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो मेक दीज नोट्स एज इट कवर्स ईच एंड एवरी टॉपिक. बाकी इससे पहली वीडियो में मैंने जो मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स वाले टॉपिक था उसमें मैंने सारे थिंकर्स को कवर नहीं किया था बिकॉज उनके बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल है. लाइक वी जस्ट हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरेस्ट कि हमें कौन से फिलोसफर्स को कवर करना है एंड कौन से नहीं, बिकॉज देर आर सो मैनी. सो in that video I have covered only 3 or 4, but rest I have covered each and every topic of every unit. So we are here, we are just left with 2 more units. Last is just case study, so we are left with 1 more unit. I'll cover the remaining topics of this unit, that is 6th unit, in next video, and then we are only left with 1 unit. After that we will also do some case studies, and केस स्टडीज़ के बाद हम कुछ PYQs भी रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा एथिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए एंड थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें हाँ एथिक्स हमने कवर कर लिया है. सो उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे. सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.